10, 11 में चलो आ जाओ भाई। राइट, एक छोटा सा अपना एक पार्ट बी का एक चैप्टर बचा था, हमने 2 मैराथन ले लिए थे, 2 मिनी मतलब सॉरी पार्ट बी का एक अपना मिनी मैराथन ऑलरेडी हो चुका था। राइट, जिसमें हमने जस्ट अ सेकेंड, जिसमें हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था आपके चैप्टर नंबर 14, 15, 16। राइट, तो पार्ट बी हमारा 40 मार्क का है, जिसमें से 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी CFL पार्ट बी के मिनी मैराथन 1 में कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट था, जिसमें मैंने आपको एक डिटेल में एक चार्ट दिया है, वो ड्राइव लिंक पे आप क्लिक करके ले सकते हो। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट आपका मैंने इंटरनेशनल वाला लिस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, और प्रिपेयरिंग एन कंपनी फॉर एन IPO वो भी कंप्लीट हो गया था, तो 3 चैप्टर हो चुके थे। सिर्फ ये एक छोटा सा 1 घंटे का एक वीडियो रहेगा। 1 घंटे में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है, जो पार्ट बी का सबसे बड़ा चैप्टर है, CFL के पार्ट बी का सबसे बड़ा चैप्टर है, जो कि आपकी लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है, दिस वी विल कंप्लीट विद इन एन आवर। ठीक है, 1 घंटे का टारगेट रखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। डन, चलेगा? सब लोग साथ में हो, आई होप इट्स वर्किंग फाइन। और परफेक्ट चल रहा है भाई, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, एक बार ध्यान से देख के अपडेट कर देना। राइट, ये रहा आपका लिस्टेड कंपनी कंप्लायंस अंडर सेबी, ये आपका पार्ट बी का चैप्टर नंबर, पार्ट बी का अगर मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड, ये आपकी CFL की बुक, ये अपनी रिवीजन बुक, आप अगर ध्यान से देखोगे तो पार्ट बी में देयर आर ओनली 4 चैप्टर, 4 में से 14, 15, 16 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये सिर्फ एक पार्ट बचा हुआ है, मिनी मैराथन लेके 1 घंटे में खत्म कर देंगे। मतलब आपका CFL का 40 मार्क का जो सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी शिवम अब्बट सर ने आपका LODR ICDR लिया हुआ है, रीट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ रहती है। और पार्ट बी का जो मेजर पोर्शन था 40 मार्क का, उसका मेरा मिनी मैराथन पेंडिंग था, तो मैंने एक ऑलरेडी ले लिया, जिसमें 3 चैप्टर हो गए। अभी 1 घंटे का एक सेकंड मिनी मैराथन ले रहा हूँ। ठीक है, क्विक रिकैप बेसिस पे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर नंबर 13 डिटेल में, जो कि बहुत ईजी है, नथिंग मच। बहुत सारा कॉपी पेस्ट है एग्जीक्यूटिव का भी, और बहुत सारा इसका कवरेज ऑलरेडी बाकी चैप्टर्स में भी, बाकी सब्जेक्ट में भी कवरेज आ चुका है, तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा, नॉट टू वरी। फटाफट कंप्लीट करते आ जाओ। चलो ध्यान से देखते, सबसे पहले ये किसको किसको एप्लीकेबल है, टू हुम ऑल दिस एप्लीकेबल। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड और SMA एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये तीनों के इसमें, मतलब चाहे वो मेन बोर्ड हो, SMA एक्सचेंज हो या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सबको एप्लीकेबल है। ठीक है सर, NCD, NCRP मतलब नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, परपेचुअल डेट, परपेचुअल NCRPs, इनके लिए भी एप्लीकेबल है। IDR मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, मतलब जैसे आपने सुना रहेगा GDR, ADR, हमारे इंडियन कंपनीज बाहर जाके दूसरे कंट्री में जाके वहां पे उनके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होके वहां पे वो ADR GDR इशू करके पैसा रेज करती है, जो हमने एज अ फंडिंग वाला पार्ट देखा हुआ है CFL पार्ट ए में। ठीक है, तो जैसे ही मतलब IDR में क्या है, दैट इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी, राइट, सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड। नेक्स्ट आता है अपना सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट आता है अपना सिक्योरिटी रिसिट्स, यूनिट इशूड बाय म्यूचुअल फंड्स, and next last is any other security has been specified by SEBI. So all these list says कि ये जो आपका लिस्टेड कंपनी का कंप्लायंस है अंडर सेबी, विच इज द लिस्टिंग रेगुलेशन LODR 2015 में, जिसको मेजरली बोलते हैं, वो किन किन को एप्लीकेबल है, तो ये सारे लोगों को एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड चीज, अगर आप ध्यान से देखते हो इंट्रोडक्शन में, सेबी LODR 2015, ये ब्रीफ ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसके प्रिंसिपल क्या है, मेजरली प्रिंसिपल अंडर LODR क्या है, रेगुलेशन 2015 क्या बोलता है, फिर कॉमन ऑब्लिगेशन क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, की प्रोविजन, नेक्स्ट है आपके रेगुलेशन एप्लीकेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बट आपको 1 बाय 1 लर्न करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए समरी फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये LDR बुक से आपका इजीली आप क्विक रिकैप कर पाओगे 1 डे बिफोर एग्जाम में, तो यू कैन रेफर दिस। ठीक है, फिर आते हैं बोर्ड कमिटीज अंडर सेबी LODR, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कमिटीज की आप अगर मेजरली लिस्ट बोलते हो ये चैप्टर में, तो आपने सुना रहेगा ऑडिट कमिटी, SRC, NRC, रिस्क कमिटीज,
तो ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर्स है। तो आप प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात, ये चारों में से मिनिमम एक तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि बाबा आइदर सर कंपोजिशन का क्वेश्चन आ जाए, या राइट अ ब्रीफ नोट ऑन दिस दिस कमिटी, या फिर आपको बोल देंगे कि ये कमेटी के इसमें कंपोजिशन कैसा रहेगा, हु विल हेड, कितने मीटिंग्स होंगे, इसके मीटिंग के नोट्स कैसे बनेंगे, एकदम बेसिक प्रैक्टिकल की स्टडी टाइप में आपको एज अ सजेशन बोल के भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर पॉलिसी अंडर LODR क्या है, डिस्सेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्सेमिनेशन मतलब शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो एक है बाय लिस्टेड एंटिटीज, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स ऑफ फॉर्मेशन, पीरियोडिकल कंप्लायंस फॉर लिस्टेड एंटिटीज। पीरियोडिकल कंप्लायंस मतलब इसमें मंथली, क्वार्टरली, और अच्छा कोई स्पेसिफिक चीज अगर कोई इवेंट हुआ है तो मीटिंग होते ही कितने टाइम में बताना है, कितने घंटे में बताना है, वो सारी चीजें इसमें कवर होती है। SME के लिए क्या है, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर, इसमें वो कंपनीज कवर होंगे जो कि एज पर MSME एक्ट अपनी माइक्रो स्मॉल मीडियम में कवर होते हैं, राइट। अच्छा, कंप्लायंस कैलेंडर क्या है लिस्टेड एंटिटीज का जो SME में है, ठीक है, मतलब उनको क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं। नेक्स्ट अपना, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट अपना पार्ट इसमें कवर होता है NCD, NCRPs और रिकॉग्निशन टू कंपनी सेक्रेटरी अंडर सिविल LODR। ठीक है, ये सारा पार्ट कवर्ड है इसमें। एक सेकेंड, यस, अच्छा कंप्लीट, राइट। नेक्स्ट चीज अभी हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। अभी द कंप्लायंस विद द कॉर्पोरेट, नहीं एक काम करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कमिटीज, सबसे पहले वो कमिटीज खत्म करते हैं फिर रिमेनिंग पे आते हैं। ठीक है, कमिटीज खत्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये चैप्टर का। तो देखो कंपोजिशन में कितने लोग हैं सर, पहला है ऑडिट कमेटी, दूसरा है NRC, तीसरा है सर स्टेक होल्डर कमेटी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SRC भी बोलते हैं, मतलब NRC SRC जिसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, तो सर 4 कौन से, फटाफट एक बार क्विक रिकैप कर लो सर। एक है आपका ऑडिट कमेटी, ठीक है, दूसरा है SRC, NRC, रिस्क कमेटी, 4 चीजें। ठीक है, अभी इधर आ जाओ, ऑडिट कमेटी में क्या क्या आता है सर। कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, तो सबसे पहला पॉइंट, मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए, 3, 2/3 मतलब 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मतलब कितना आता है सर, 66.66%। अगर आप बोलते हो तो 67% आपके क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। इंडी चाहिए कितने, 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपके टोटल कंपोजिशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग SR इक्विटी शेयर, ठीक है, तो ऑडिट कमेटी शैल ओनली कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब 100% फिर इन दिस पर्टिकुलर केस आउटस्टैंडिंग SR इक्विटी शेयर रहेगा तो 100% इंडिपेंडेंट, तो उसमें 2/3 नहीं एप्लीकेबल है, उसमें 100% होगा। ये ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और बाकी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट, ये मतलब फिट एंड प्रॉपर पर्सन के डेफिनेशन जो हमने IBC और बाकी एक्ट्स में भी जो पढ़ा हुआ है, दिस इज द सेम। फिट एंड प्रॉपर पर्सन की डेफिनेशन क्या है, यही पढ़ते थे हम, फाइनेंशियल लिटरेट, एटलीस्ट 1 मेंबर शैल हैव अकाउंटिंग और रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज। बिकॉज ऑडिट कमेटी का काम मेजरली क्या रहता है कि सर ऑडिटर का काम बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, उनका कोऑर्डिनेशन, उनकी रिपोर्टिंग, सर ऑडिट के रिपोर्ट में कुछ मेजर डिस्क्रिपेंसीज आई है क्या, अकॉर्डिंगली ऑडिट कमेटी का इंटेंशन ये है कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर के पॉइंट्स है, ये सारी चीजें क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर के चीजें, ऑडिट कमेटी, SRC, NRC, आपके जैसे विसल ब्लोअर हो गया, आपके प्रिवेंशन ऑफ, आप जैसे बोलते हो इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सारी चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टाइप है। तो ऑडिट कमेटी का मेन इंटेंशन क्या रहता है सर, ऑडिट कमेटी का मेन इंटेंशन ये है कि जो ऑडिटर डिस्क्रिपेंसीज पॉइंट आउट कर रहा है, क्या उसका कंप्लायंस हो रहा है नहीं, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट कंप्लायंस के हिसाब से हो रहा है नहीं, रोटेशन बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी चीजें। ठीक है, ड्यू डिलिजेंटली ऑडिटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या ऑडिटर को रिप्लेस करने की जरूरत है क्या, ठीक है, ऑडिटर के जो एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या कंप्लायंट है या नहीं है। सो इंटायर कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द ऑडिट कमेटी। ठीक है, और गवर्निंग बॉडी भी कौन है इसकी पर्टिकुलर लेवल पे, ऑडिट कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट चीज सर आप अगर देखते हो तो ये 1 बाय 1 पार्ट हो गया ऑडिट कमेटी का। नेक्स्ट सेक्शन देखो, NRC सर, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी का, उसका क्या लिखा है सर, सेम चीज है, मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, ऑल डायरेक्टर शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव नहीं, ध्यान से सुनना, नॉन एग्जीक्यूटिव, एटलीस्ट 50% क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो वापस बोलो सर, ऑडिट कमेटी में मिनिमम इंडिपेंडेंट कितने चाहिए, 2/3। ठीक है, और SR वाला केस रहेगा, SR इक्विटी शेयर वाला तो 100%, ये केस में कितना 50%। और अगर लिस्टेड एंटिटी सेम चीज, आउटस्टैंडिंग SR रहेगा तो क्या 2/3। तो कैसे याद करेंगे, ऑडिट कमेटी पे 2/3 एंड 100%। ठीक है, और आपका जब NRC की बात करते हैं तो 50% एंड 2/3। ठीक है, नेक्स्ट इज कमेटी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, ये हो गया हमारा, सॉरी ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते स्टेक होल्डर रिलेशनशिप पॉइंट। ठीक है,
कमिटी शैल कंप्राइज सेम चीज एटलीस्ट 3, शैल हैव एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें क्या है एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट चीज क्या है, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग एसआर रहेगा तो एटलीस्ट टू थर्ड एसआरसी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। तो वापस ध्यान से सुनना भाई कि इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, ठीक है, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो इसमें वो 50% और 2/3 का कैलकुलेशन नहीं है, एंड हैविंग एसआर रहेगा तो कितना चाहिए भाई, एटलीस्ट 2/3। तो वापस एक बार बोलो, ऑडिट कमिटी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए सर, ऑडिट कमिटी में 2/3 चाहिए, हैविंग एसआर रहेगा तो 100% चाहिए। नेक्स्ट चीज, अगर आपका एनआरसी है तो उसमें नॉर्मल केस में 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, और हैविंग एसआर वाला केस रहेगा तो 2/3 चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, ऑडिट कमेटी में नॉर्मल केस में 2/3 और हैविंग एसआर केस में 100%, एनआरसी में नॉर्मल केस में 50%, हैविंग एसआर में 2/3। और स्टेक होल्डरशिप अपना एसआरसी में कितने हैं, नॉर्मल में 1 चाहिए, टोटल मिनिमम 3 चाहिए, और उसमें से एक आपका सर मतलब 5 हो सकते हैं ना एसआरसी में डायरेक्टर, आंसर इज यस, ठीक है। सर मेरी बात ध्यान से समझना, मिनिमम नॉर्मल केस में 1 इंडी चाहिए, बट अगर हैविंग एसआर वाला रहेगा तो कितने चाहिए भाई, एसआरसी वाला केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए, 2/3। तो ये नॉर्मल केस है। देन अच्छा लास्ट में आ जाओ आरएमसी मतलब रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल हैव मिनिमम 3 members with majority of them having the member of BOD including at least 1 independent director, ठीक है। तो इसका सिंपल चीज है सर, मैक्सिमम लोग कौन से होने चाहिए, बीओडी को रिप्रेजेंट करने वाले, बीओडी के पार्ट के मेंबर वाले, और उसमें से एक तो इंडी चाहिए, नॉर्मल चीज। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ क्या, स्टेक होल्डर और आरएमसी में क्या कॉम्बिनेशन में, मतलब ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में मिनिमम एक वनडी लगता है, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1 इंडी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर लिस्टेड हैविंग वही चीज आउटस्टैंडिंग ऐसा रहेगा तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ आरएमसी शैल कंप्राइज इंडिपेंडेंट। तो बताओ सर, क्या मैं एसआरसी और आरएमसी को कॉम्बिनेशन में दोनों को क्या मैं सिमिलरिटी बोल सकता हूं क्या, यस सर, उसमें भी मिनिमम 1 डायरेक्टर था और हैविंग एसआर रहेगा तो 2/3 हो गया, तो ये दोनों तो सेम है। और अगर मैं ऑडिट कमेटी एनआरसी की बात करता हूं तो ऑडिट कमेटी में नॉर्मल केस में 2/3 है और हैविंग एसआर में 100% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और एनआरसी की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मल केस में 50% है और हैविंग एसआर में 2/3 है, करेक्ट है। तो एक चीज कॉमन आ रही है ये तीनों में, एनआरसी, एसआरसी, आरएमसी में, तो हैविंग एसआर वाला रहेगा तो सब में 2/3 मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। तो ये कॉमन चीजें याद रखो। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द क्विक रिकैप रिविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पार्ट बी ऑफ सीएफएल कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग वाला जो सेक्शन है वो 40 मार्क के लिए आता है, ठीक है। टेंटेटिवली अगर आप देखते जाए तो कवरेज बहुत छोटा है, ठीक है। और ये चीज आपकी क्लियर रहेगी ना तो फॉर श्योर यू विल डेफिनेटली गेट गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स, ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं, अभी देखते हैं सर ये चारों का चेयरपर्सन कौन होना चाहिए। तो ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए फॉर श्योर सर। अच्छा, एनआरसी में कौन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्टेक होल्डर कमेटी में कौन होना चाहिए सर, देखो क्या बोला है, चेयरपर्सन ऑफ द एसआरसी शैल बी प्रेजेंट एट द एजीएम, और आरएमसी में शैल बी मेंबर ऑफ द बीओडी एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव नॉर्मल लेवल, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, ऑडिट कमेटी में क्या बोला है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, चेयरपर्सन शैल बी प्रेजेंट एट एजीएम में अटेंड करना पड़ेगा ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन को, ताकि वो सारे शेयर होल्डर्स के जो भी क्वेरीज है उनका आंसर दे सके। सेम फॉर एनआरसी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरपर्सन चाहिए, बट प्रोवाइडेड द चेयरपर्सन ऑफ लिस्टेड वेदर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, तो वो ईडी भी हो सकता है, एनईडी भी हो सकता है, ठीक है, मे बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी, और वो कमिटी की मे शैल नॉट चेयर सच कमिटी, करेक्ट है। नेक्स्ट चीज क्या है, एनआरसी का चेयरपर्सन में भी प्रेजेंट एट द एजीएम टू आंसर स्टेक होल्डर क्वेरी, तो क्या ये सेम एज पर ऑडिट कमिटी हो गया, आंसर इज यस, बट इट शैल बी अप टू द चेयरपर्सन who shall answer the queries, the chairperson of this committee shall be NED. Next is stakeholder committee, sir, chairperson shall present at the AGM to answer queries। तो क्या ये तीनों लेवल पे एक चीज कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है कि प्रेजेंट करना, मीटिंग में प्रेजेंट रहना पड़ेगा ताकि हम आंसर कर सके क्वेरीज को, ठीक है। आरएमसी में मेंबर ऑफ बीओडी, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड लिस्टेड ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज मे बी मेंबर ऑफ कमिटी, देन नॉर्मल लेवल। अभी ध्यान से समझना है,
अभी आते हैं हम मीटिंग्स पे, ठीक है। मीटिंग कितनी करनी है, ऑडिट कमेटी के कितने मीटिंग होनी चाहिए, मिनिमम कितना लिखा है 4 टाइम्स इन ईयर और नॉट मोर देन 120 डेज का गैप, ठीक है। मतलब 4 मीटिंग तो लेनी चाहिए आपको, एंड सबसे इंपॉर्टेंट नॉट मोर देन 120 डेज शैल लास्ट बिटवीन 2 मीटिंग, ठीक है। क्लियर कट 4 याद रखने बहुत जरूरी है। 4 आपकी ऑडिट कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। अपना एनआरसी एटलीस्ट वंस अ ईयर, एसआरसी एटलीस्ट वंस अ ईयर, आरएमसी एटलीस्ट ट्वाइस। तो कैसे याद करेंगे इसको, 1 2 4 कैसे याद करना है, एकदम सिंपल है। 1 उसका डबल 2, 2 का डबल 4, तो 1 किसको किसको एप्लीकेबल है, एसआरसी एनआरसी दोनों भाई भाई, एसआरसी एनआरसी भाई भाई। उसके बाद आरएमसी मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसका मिनिमम कितनी बार मीटिंग करना है, 2 बार। फिर आरएमसी का डबल ऑडिट कमेटी 4, कैसे याद रखना है, 1 1 2 4, 1 अपना किसका है, आरएमसी का, मल्टीप्लाई बाय उसका डबल, मतलब आपका अगर ध्यान से देखते हो तो 2 किसको है, एनआरसी एसआरसी, उसका डबल 4 लगता है ऑडिट कमेटी, याद रहेगा भाई। आ जाओ कोरम की बात करते हैं। ऑडिट कमेटी का कोरम कितना है, शैल बी आइदर 2 मेंबर और 1/3 ऑफ द मेंबर विच आर ग्रेटर विथ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब मीटिंग कब वैलिडेट कंसिडर होगी, व्हेन द पर्टिकुलर कोरम इज प्रेजेंट। सर अगर कोरम नहीं रहेगा तो क्या वो मीटिंग कंसिडर नहीं होगी, उसके डिसीजन को अप्रूवल नहीं मिलेगा। व्हाट एवर द डिस्कशन विच इज डन इन द मीटिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ करेक्ट वैलिड मीटिंग। सो ऑडिट कमेटी में कितना कोरम चाहिए, वापस बताना सर, 2/3 सॉरी मिनिमम आइदर 2 मेंबर और 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर। तो सर क्या बोल रहे हो, फिर से बताना। सर अगर समझो मेंबर, समझो 5 लोग हैं, समझो 6 लोग हैं, तो 6 का 1/3, 6 का 1/3, और समझो देखो मिनिमम 2 तो रहने हैं, ठीक है ना। तो आइदर इट विल बी 2 और 1/3 विच एवर इज ग्रेटर। तो सर अभी जैसे आपने बोला 6 का 1/3 कितना आता है, 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या कितना है, 1/3 2, तो 2 और 2 विच एवर इज ग्रेटर, तो वही आ रहा है। बट अगर समझो 8 लोग हैं, तो मैं अगर सॉरी एग्जांपल 9 लोग हैं, समझो 9 का 1/3 कितना आता है, 3 और 2 विच एवर इज ग्रेटर, तो 3 आएगा, तो विथ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मिनिमम हमारे केस में जैसे एग्जांपल लिया हमने टोटल 9 का, तो उसका 1/3 आ रहा है 3 और 2 विच इज ग्रेटर, तो हो गया 3, ठीक है। तो वो 3 में से भी 2 लोग कौन से चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, सिर्फ ये एक पॉइंट के ऊपर ही, ओनली ऑन दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट एज वेल दे कैन आस्क यू अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं जिसमें वो बोलेंगे कि XYZ कंपनी थी, ये कंपनी ने ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन ये था, इनकी मीटिंग इतनी हुई, ये तारीख को इतने लोग प्रेजेंट थे, उसमें से दीज मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड दीज मेनी नॉर्मल डायरेक्टर्स में प्रेजेंट, ठीक है। उसमें ईडी इतने थे, एनईडी इतने थे, ऐसा सब घुमा फिरा के आपको डिटेल दे देंगे। नाउ दे विल आस्क यू whether this meeting satisfy the quorum as required under LODR. This may be the question in this examination, ठीक है। तो आपको सिंपल प्रोविजन ऑफ द लॉ क्या बोलता है, 2 और 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर इज ग्रेटर, ये आपका मिनिमम कोरम है, एंड उसमें भी मिनिमम 2 इंडी चाहिए, दैट्स इट, सिंपल। एक की वर्ड या आपकी की प्रिंसिपल विल गिव यू एंटायर मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट पॉइंट, एनआरसी की बात करते हैं। कोरम कितना है भाई मीटिंग का, एनआरसी का मिनिमम 2, मतलब आइदर 2 और 1/3 विच आर ग्रेटर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1। तो क्या मैं बोलूं ऑडिट कमेटी और एनआरसी में बेसिक सेम है, आंसर इज यस। उधर भी 2 और 1/3 सेम था, बट यहाँ पे मिनिमम 2 इंडी चाहिए थे, यहाँ पे ओनली 1 रिक्वायर्ड एज इंडी, वेरी गुड। तो आपको इसे 2-3 अलग अलग कमेटीज के मीटिंग का कॉम्बो देके वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से, राइट। नेक्स्ट चीज ध्यान से सुनना भाई, आरएमसी की बात करता हूं मैं। RMC में the quorum for a meeting of the RMC shall be either 2 or 1/3 whichever is higher including at least 1। तो मैं सेम चीज बोलूं क्या NRC का और अपने RMC का भी सेम है, आंसर इज यस। और चीज क्या लिखी है, मीटिंग ऑफ द RMC shall be conducted in such manner that on continuous basis not more than 180 days shall elapse between any two consecutive meeting। क्योंकि सर आपने नंबर ऑफ मीटिंग अभी पढ़ा ना कि कमेटी शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। देखो ना, अरे सर एसआरसी और एनआरसी को एक ही बार मिलना है साल में, बट ऑडिट कमेटी को 4 बार, तो उनका गैप शुड नॉट बी मोर देन क्या बोला है, देखो
एंड नॉट मोर देन 120 शैल elapse between टू मीटिंग। तो उसका मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? 120 ज्यादा गैप नहीं चलेगा। जैसे कि आरएमसी में कितना गैप अलाउड है? 180 डेज। याद रहेगा भाई, नॉट मोर देन 180 डेज, राइट। फिर आ जाओ रेगुलेशन 29। अभी वो किसकी बात करता है? प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग टू स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, चलेगा। हमारे एक बार कमिटीज पूरे कंप्लीट हो गए क्या? एक बार देख लो क्या क्या कमिटीज थे सर। 4 थे। उनके चेयरपर्सन याद रखना है, हु विल बी द चेयरपर्सन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या थी? जनरली इसमें मेजरली क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहता है। नेक्स्ट आपके मीटिंग्स 1 2 4। 1 किसके लिए? 1 किसके लिए? एसआरसी एनआरसी। उसके ऊपर आता है 2। 2 किसके लिए सर? 2 है हमारा आरएमसी। और उसके ऊपर उसका डबल 4। 4 मतलब ऑडिट कमेटी। सर गैप 120 फॉर ऑडिट कमेटी और अपने रिस्क कमेटी के लिए 180। याद रहेगा भाई, एकदम सिंपल, वेरी गुड। नेक्स्ट कोरम की बात करते हैं। तो कोरम में ऑडिट कमेटी और एनआरसी सेम है, 2 और 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर इज ग्रेटर। बट उसमें एक कंडीशन दोनों में अलग अलग है कि ऑडिट कमेटी में मिनिमम 2 एमडी प्रेजेंट चाहिए और आपके एनआरसी में मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। आई होप। परफेक्ट 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 परफेक्ट, वेरी गुड। चलेगा। तो ये छोटा सा चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम वाइज बड़ा है। एलओडीआर का काफी रेफरेंस है, बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट है, रिपीट आ रही है एग्जीक्यूटिव लेवल की भी, तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जब एग्जैक्टली एग्जामिनेशन कंडीशन सर्कमस्टांसेस जो एटमॉस्फेयर है उसको लगता है सर कि नहीं वो 2 थे या 1 थे, 120 था या 180 था। तो अगर एक छोटा सा प्रोविजन अगर वो टाइम पे याद नहीं आया तो आप स्ट्रेट अवे आपका फ्लैट 5 मार्क का क्वेश्चन चले जाएगा। तो इट्स आर ड्यूटी कि छोटा सा सेक्शन है, पार्ट भी दिखने के लिए 4 चैप्टर 40 मार्क देते हैं। तो हमें हमारे लिए ये चैप्टर के एक एक लाइन एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखते हो कि अगर मैं प्लानिंग करता हूँ ओवरऑल ग्रुप 3 की, ग्रुप 3 में आपके 2 ओपन बुक की बात करते हैं हम, बट अगर ये एक ही पेपर है जो आपका नॉर्मल पेपर है सब्जेक्टिव जो आपको प्रॉपर लिखना है, अगर ये आपको अच्छे से स्कोर दे देता है और ओपन बुक में से दोनों में से एक भी अच्छा स्कोर आपका एग्जामिनेशन लेवल में हो जाता है, ठीक है, तो ये दोनों आपका ग्रुप 3 तो निकाल ही देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको ओवरऑल जो आपका एग्रीगेट स्कोर है उसमें काफी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, अभी ध्यान से देखना। तो ये हमने कमिटीज का देख लिया, एक बार कमिटीज देख लिया। मुझे आपको एक बार मैं मॉडल ओपन करके रख देता हूं, मॉडल भी ओपन करके रख देता हूं। मॉड्यूल में देयर इज अ टेबल डिटेल में जो दिया हुआ है सीएफएल का, दैट वी विल सी क्या सारे पॉइंट्स कवर हो गए क्या मेजरली, मतलब अगर कुछ छूट गया है तो वी कैन क्रॉस चेक अभी के अभी, राइट। पेपर नंबर 7 सीएफएल चैप्टर नंबर 13 विल डायरेक्टली ओपन। तो उसमें एक टेबल दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने मॉडल में, वो अभी हम देख लेते हैं फटाफट, राइट। मतलब उसमें वही दिया है कि मीटिंग कितने होने चाहिए, चेयरपर्सन क्या है, वो टेबल भी आप 1 डे बिफोर स्टार मार्क करके रखो, उसको स्टिक नोट लगा के रखो एलडीआर के लिए। 1 डे बिफोर एग्जाम यू विल रेफर दिस। भूल के भी छोड़ना मत भाई, गलती से भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, याद से कर लेना। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 13, ये रहा पार्ट 2, ठीक है, लिस्टिंग। तो अगर मैं डायरेक्टली अभी एक काम करता हूँ, आपके वो जो कमिटीज है, कमिटीज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं उसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ, राइट। जो टेबल दिया है इंस्टीट्यूट ने, ये रहा वो टेबल, राइट। तो इसको डबल स्टार मार्क कर लेना भाई, ठीक है। कंपोजिशन ये हमारा हो गया, क्या कंपोजिशन हमने कर लिया, क्या चेयरपर्सन हमने कर लिया, राइट। क्या चेयरपर्सन कर लिया क्या हमने, ये देखो ये पूरा चेयरपर्सन वाला पॉइंट। क्या मीटिंग्स हमने कर लिया, मीटिंग हमने कर लिया। नेक्स्ट कोरम हमने कर लिया, राइट, यस। Secretarial standard SS1 prescribe that unless otherwise stipulated in the act or under any other law, quorum of any committee constituted by the board shall be specified by the board. If such no quorum is specified as stated above, presence of all the member of any such committee necessary to find quorum. तो अगर सर कोरम नहीं हुआ तो क्या, वो डिस कमेटी के वो पर्टिकुलर मीटिंग के जो भी डिसीजन लेंगे will not be considered as valid, it will be considered as void। बात करते हैं रोल कमेटी का रोल क्या रहता है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या रोल है सर। रोल ऑफ द कमिटी एंड द इंफॉर्मेशन टू बी रिव्यू बाय द ऑडिट कमिटी शैल बी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2। अच्छा, इसमें तो सिर्फ आपका ये शेड्यूल दिया है। अच्छा, मैं अगर सिर्फ आरएमसी की बात करता हूँ तो क्या लिखा है, डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आरएमसी एंड मे डेलीगेट मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग वर्क ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन, ये मैं जो आपको बता रहा था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एबीसी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, having all committees constituted in compliance with the listing obligations, listing regulation, मतलब AC भी है, उसके बाद SRC भी है, NRC भी है और RMC भी है। Its audit committee having 5 directors, ध्यान से समझना भाई,
5 डायरेक्टर है उसके, ठीक है, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। एट अ मीटिंग ऑफ द कमिटी 2 वेर प्रेजेंट, एक एनईडी है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। मतलब ध्यान से समझना भाई, ऑडिट कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसका कोरम का क्वेश्चन आया है, कितने चाहिए भाई साहब, हमने अब भी पढ़ा है मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट चाहिए, मिनिमम 2 और 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और इसमें से भी एटलीस्ट मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। तो अभी कैलकुलेटर ले लो, ध्यान से देखना सर, 5 टोटल डायरेक्टर है, ठीक है ना, 5 का हमने देख लिया, 5 का 1/3 कितना होता है 1.6 और 2 विचर इज हायर, तो 2 हो गया, तो 2 चाहिए, तो 2 प्रेजेंट भी है, आंसर इज यस। तो क्या वैलिड है, यहां तक वैलिड है, बट आगे क्या बोला है सर, एक नॉन एग्जीक्यूटिव है और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो बोलो ये मीटिंग वैलिड है क्या, आंसर इज व्हाट, डायरेक्टली 2 independent directors should be present, therefore opposite meeting is invalid as only 1 director is present। एकदम सिंपल, टू विच इज हायर, राइट, एकदम बेसिक पार्ट है। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें आती है भाई साहब, याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी कौन है, सीएस है। प्रोविजन ऑफ आरएमसी शैल बी एप्लीकेबल टू टॉप 1000 डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप, and RMC shall have power to seek information from any employee or obtain outside legal or other professional advice if necessary। बेसिक पार्ट है, राइट। नेक्स्ट इज, अभी ये हमारे कमिटीज खत्म हो गए, हमारे ये रहे कमिटीज, ठीक है। तो ध्यान से समझना सर, इसके नंबर भी याद कर सकते हैं, तो कभी भी क्वेश्चन आया तो आप रेगुलेशन नंबर के साथ में इजीली लिख पाओगे। वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, ऑर्डर वाइज देखो, 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21, 18 AC, NRC, SRC, RMC। तो सर कभी भी आप अगर नाम भी पढ़ते हो तो गो विद द ऑर्डर, ऑलवेज रिमेंबर, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, इफ यू आर गोइंग out of the order you will lose out the regulation number। so simple है to remember the regulation number as well। it start from 18, 18, 18, 19, 20, 21, 18 for AC, AC के बाद NRC, NRC के बाद SRC, SRC के बाद RMC, RMC at the end, तो 21, 18, 19, 20, 21। so whenever you are getting any question from this committee line, first line should be as per the regulation number, this regulation number 18, 19, 20, 21 जो भी है लिख दो। this will give additional age to your answer, it's a pattern of good presentation, ठीक है। अच्छा, in case अगर याद नहीं आता है तो skip it, but it's a good additional point। ऐसे लिखते वक्त ही ऑर्डर दिमाग में फिक्स रखो, start from 18, that's it, एक सिंपल पॉइंट है। 18, 19, 20, 21 ऑडिट कमेटी, 18 ऑडिट के बाद में NRC, SRC, RMC, that's it, perfect, good, are you done with this? सबसे इंपॉर्टेंट था ये आपका कमिटीज वाला पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी गुड। अभी आगे बढ़ते हैं, राइट, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान से समझना। अभी कहाँ पे गया अपना, एक सेकंड, यस, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया। फिर हम देखते हैं कि हमारे ये जो प्रायर इंटीमेशन, अच्छा अभी बेसिक पे आ जाते हैं फिर से स्टार्टिंग पे। सर, कंप्लायंस विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीजें हैं, ये जो हमने डिस्कस की अभी, राइट। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी क्या है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक प्रैक्टिस है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करने के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब भी क्या, एथिकल प्रैक्टिसेस, दैट्स इट, टाइमली इंफॉर्मेशन, नो मिसप्रेजेंटेशन, करेक्ट है, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दिस इज आवर मेजर इंटेंशन ऑफ अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना, ये मेंटेन करना, ये किसकी जिम्मेदारी है, मतलब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। सिंपल, दे हैव टू गिव द डिक्लेरेशन, करेक्ट है, बोर्ड रिपोर्ट में भी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज मेंटेन थ्रू आउट द ईयर, करेक्ट है, यस। नेक्स्ट इज लिस्टेड एंटिटी हैविंग, ये किसको किसको एप्लीकेबल नहीं, कंप्लायंस विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस शैल नॉट अप्लाई, किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है। पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कितना, 10 करोड़ से ऊपर नहीं है, राइट, एक सेकंड, एंड नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो दो कंडीशन ध्यान में रखना, 10, 25, 10 is for what, paid up share capital, 25 is for what, net worth। if your amount, both the conditions should satisfy, if any one of the condition is not getting satisfied, then what will happen, then the corporate governance provision will be applicable। once the above regulation become applicable to a listed entity, listed क्या लिखा है, sorry, become applicable to listed entity, they shall continue to remain applicable till such time the equity share capital or net worth remains below the specified threshold for a period of 3 consecutive financial year। तो 1025 के नीचे कंसेक्यूटिवली 3 साल के लिए अगर आपकी अमाउंट कम नीचे रह जाती है तो सिंपल है, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं लगेगा।
बट एक बार लिस्टेड को लग गई तो जिंदगी भर, जब तक लिस्टेड कंपनी जिंदा है तब तक उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज की फंक्शन ऑफ बीओडी, क्या क्या है सर? सिंपल चीज है, बीओडी का क्या मेन फंक्शन क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उनका काम क्या है सर? लिस्टेड एंटिटीज गवर्नेंस प्रैक्टिसेस का इफेक्टिवनेस मॉनिटर करो, मेकिंग द चेंजेस एज एंड व्हेन नीडेड। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट, कंपेंसेट, मॉनिटर एंड वेयर नेसेसरी रिप्लेसिंग। तो कोई अगर पर्टिकुलर केएमपी सही काम नहीं कर रहा है, गलत काम कर रहा है, इफ दे आर नोटिसिंग दैट देर आर सम, लेट्स से इनसाइडर ट्रेडिंग कुछ इशू है, या फिर नॉट अ प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, नॉट एक्सरसाइजिंग द एक्सपेक्टेड रोल, क्योंकि हर डायरेक्टर का एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनलाइज है। इफ दे आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज देन दे कैन रिप्लेस इट एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट, aligning the KMP and remuneration of BOD with the longer term interest, correct? Obviously they have to go in a longer run as a company, so they have to ensure this. Ensuring transport nomination process on the BOD with the diversity of thought, experience, knowledge and prosperity and perspective and gender. तो KMP का जो जितने भी अपने नॉमिनेशन प्रोसेस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ये अपना आपने देखा रहेगा, तो ये नॉमिनेशन प्रोसेस का जो इनकी जो पॉलिसी है दैट विल आल्सो बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, दैट इज मैंडेटरी, राइट? तो इसमें ये सारे पॉलिसी में भी ये कंटेंट में लिखा रहेगा। सो इफ दे आस्क यू व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पॉलिसी, यू कैन राइट दिस एज वेल। ओवरसीइंग द प्रोसेस ऑफ डिस्क्लोजर एंड कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द बीओडीज इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क, सिंपल। तो ये आपके मेजर 6 बुलेट पॉइंट, 5 बुलेट पॉइंट्स है जिससे आपको इजीली कीवर्ड याद रहेगा एंड यू कैन प्रॉपरली प्रेजेंट द sentence in the examination. Next is ये हो गया। Other responsibility क्या क्या है? BOD shall provide strategic guidance to the listed entity, what to do, what not to do. Correct? Ensure effective monitoring. Sir, guidance means what? Let's say the listed entity wants to do some corporate, let's say corporate restructuring, or they want to do any particular application or any compounding or whatever the case may be. As far as law compliance is concerned, so they can strategically guide them what to do, what not to do in during what is the due date, correct? And all the latest update from the law perspective will also be suggested. The BOD shall set a corporate culture and the values by which executive throughout a group shall be, obviously. नेक्स्ट, जैसे अभी हमने टाटा का एग्जांपल लेते तो टीसीएस में भी एक पर्टिकुलर कल्चर है जो फॉलो कराया जाता है, विच इज फॉलोड बाय द एंटायर बीओडी। मेंबर ऑफ द बीओडी शैल एक्ट ऑन अ फुल्ली इन्फॉर्म्ड बेसिस, दे कैन टेक एनी डिसीजन halfway, they have to act diligently because their one decision can change the entire game of the company. So many stakeholders of the company are dependent on the company's decision making. Example, dividend decision, company's business incorporate, business operations decision, which product to be sold, which product to be made and what not. Every single decision will play a vital role on the company's future, correct? With due diligence and care in the best interest of the listed entity and shareholder. They can't act against the interest of the shareholder because they are just the representative of the shareholder. They are not the owner of the company, shareholders of the owner of the company. BOD are just the representative body who takes care of the company, who takes the decision making and act in the interest of the company and its shareholder stakeholder, correct? I hope this is clear. Next, the BOD shall encourage continuing directors training to ensure that members of the board kept up to date, correct है? अच्छा, इनका काम क्या रहेगा? और एक चीज इंपॉर्टेंट कि सर जो कंपोजिशंस है वो भी फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितने रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, लेट्स से या वुमेन डायरेक्टर चाहिए, या समझो सीएसआर के कमिटीज करना है, सर समझो विसल ब्लोअर पॉलिसीज है, नॉमिनेशन रेम्युनेशन है, एसआरसी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे मीटिंग बराबर हो रहे नहीं हो रहे, कंपोजिशन सही है नहीं है, तो सारा ये बीओडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू चेक, करेक्ट है? Where decision of the BOD may affect the different shareholder group differently, the board of directors shall treat all shareholders fairly. Simple. So that ये सारे पॉइंट्स आपके इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और शेयर होल्डर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं प्रिंसिपल गवर्निंग डिस्क्लोजर। Listed entity shall abide by the following principle. क्या क्या? While making disclosure to the stock exchange or its website. क्योंकि सर आपने एकदम बेसिक चीज सुनी हुई है कि they have to do monthly compliances, weekly compliance or yearly compliance or 6 monthly compliance. They may have to issue a particular statements or returns. So that time whatever the content which is specified in that particular disclosure should be true and correct. They can't say true and fair. It has to be true and correct. Whatever the information which they are providing to the stock exchanges, it has to be fully correct because the same information will be disseminated further
forward it further to the shareholders or to the expect potential shareholder who want to invest in the company. So it has to be very accurate one. There should not be any misrepresentation. There should not be any hiding of information of material nature. If they do so, they will be governed with the provisions of, करेक्ट है, सेक्शन 448 ऑफ कंपनीज एक्ट. सेक्शन 448 क्या बोलता है कि आपने जो चीज बतानी चाहिए थी बट अगर नहीं बताई, you were expected to say this material information in your disclosures but you did not. Point number 1. Point number 2, you were expected to give true and correct disclosure, but even after knowing that whatever you're writing is false, still you gave this submission. So section 448 of the Companies Act will be applicable, where penalty, if this kind of non-compliance is found, that particular board, that particular director will be considered under the penalty of 447, which is not compoundable, right? तो दो important चीजें आ जाती है, ठीक है, expected to give this information but did not, या फिर जो इंफॉर्मेशन लिख रहे हो पता है गलत है फिर भी लिख रहे हो करेक्ट है. तो ऑलवेज रिमेंबर दीज टू इंपॉर्टेंट, सेक्शन 448 एंड 447. चलेगा. प्रिंसिपल गवर्निंग डिस्क्लोजर हो गया. लिस्टेड एंटिटी शैल अबाइड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल. क्या सारे डिस्क्लोजर जो भी आप दे रहे हो एक्सचेंजेस को, वेबसाइट को, थ्रू एनी अदर मीडियम. एनी अदर मीडियम मतलब जनरली यू मस्ट हैव रेड इन वेरियस रेगुलेशन, दे आर एक्सपेक्टेड टू गिव द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट. सो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट शुड आल्सो बी एक्यूरेट एंड ट्रू एंड करेक्ट. यू कांट से कि सर मैंने वेबसाइट पे तो सही किया ना, न्यूज़पेपर में गलत किया तो चलेगा. क्या आंसर इज नो. Wherever you are giving any kind of information has to be true and correct. Next, ठीक है, information shall be prepared and disclosed in accordance with the applicable standards of accounting financial disclosure. जैसे कि सर why they are giving the reference of accounting standard, because you must have seen two types of accounting standard. One is for recognition, one is for disclosure. जैसे example AS20 which is of EPS, AS18 which is of related party, AS17 which is of segment reporting. करेक्ट है. ये सारी चीजें, जैसे कि ऐसे तो मैंने एग्जांपल बोले, AS1 आपका डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी है, राइट. AS3 आपका कैश फ्लो है, करेक्ट है. ये सारी चीजें, AS2 आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी. तो ऐसे बहुत सारे हैं आपके केस, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि आपके डिस्क्लोजर रिलेटेड की बात करते हैं. यू हैव टू गिव दिस डिस्क्लोजर विच इज गिवन इन द AFRF, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, विच इज द शेड्यूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट. So you have to give the disclosure as required by AFRF. But if you are not giving, you are considered as non-compliant. Point number 1. Point number 2. There are few accounting standards which shows how to record the transaction or what is to be recorded, what is to be evaluated. Example, जैसे AS2 says valuation of inventory, market value means the NRV, net realized value, or the cost whichever is lower. Accordingly, profit will change, net worth will change. So few accounting standard which shows how to record the transaction, few accounting standard which shows how to disclose and what to disclose and what not to disclose. So all the accounting standard and information AFRF should be followed by the BOD. It's their primary responsibility. I hope this is clear. Next point, सारी चीज रिकॉल हो रही है. मैं I'm taking most of the references of various things. जैसे मैंने अभी just कंपनी एक्ट का बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला. Whenever you are giving inserts, you should give references of other things. This will give additional edge to your answers. Next, listed entity shall abide by the following principle. ये हो गया हमारा. Listed entity shall implement the prescribed accounting standard in letter and spirit in the preparation of financial statement. अभी जस्ट हमने बात की. So it's their responsibility. जैसे आप देखते हो ना, अपना सेक्शन कौन सा है 143 जो कि ऑडिटर्स रिपोर्ट, और सेक्शन है 134 उसका उल्टा बोर्ड रिपोर्ट. ऑडिटर्स रिपोर्ट में जो भी ऑडिटर ने गलतियां बोली है, स्टैट ऑडिटर ने, हु इज द CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो प्रैक्टिसिंग जो ऑडिटर है, उसने जो जो गलतियां बोली उस पे भी आंसर देना है आपको बोर्ड रिपोर्ट में. और बोर्ड रिपोर्ट में जब वो DRS लिखता है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, उसमें 6 चीज कॉपी पेस्ट लिखता है. 6 चीज, कोई भी कंपनी का DRS ओपन करके देख लो बोर्ड रिपोर्ट, यू विल फाइंड एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट. देयर इज नो चेंज एट ऑल. एनी कंपनी यू कैन फाइंड इट आउट ऑन द गूगल, यू कैन गेट द बोर्ड रिपोर्ट का प्रिपेयर्ड रिपोर्ट, यू विल फाइंड ऑल 6. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस लगाया, इंटर फाइनेंशियल कंट्रोल लगाया हुआ है, और आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर्स, करेक्ट है, और हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट किए हैं. तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये है वो, shall implement the prescribed accounting standard, ठीक है, while preparing the financial statement which is the AFRF, taking into consideration interest of all stakeholder
and shall ensure the annual audit is conducted by independent, competent and qualified auditor. ये मैंने कौन से सेक्शन की बात की? सेक्शन 139 के अंदर जो आपके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, स्टैट ऑडिटर. ये ऑडिटर किसकी बात कर रहा है? दिस ऑडिटर इज नॉट सीए, सीएमए, इट्स स्पेसिफिकली ओनली सीए. सीए मतलब जो स्टैट ऑडिटर कर रहा है. यहाँ पे मैं सेक्रेटरियल ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ. मार्क माई पॉइंट, दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, दिस इज ओनली अ मैटर ऑफ, दिस इज प्योरली अ मैटर ऑफ आपका जो स्टैट ऑडिट की बात कर रहा है उसकी. Next, little entity shall refrain from misrepresentation, ensure information which is provided to recognized stock exchange and investor is not misleading. मैंने आपको पहले ही बोला, whatever the material information which is to be given, has whether it is given or not, it's their responsibility. Point number 2, and it has to be true and correct. ठीक है, कुछ मतलब कोई हाइड एंड सीक भी नहीं चाहिए और जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ट्रू एंड करेक्ट भी चाहिए. Shall provide adequate and timely information. If there is a due date of let's say within 30 days, you have to give this information to stock exchange as per the provision of law. And you are giving it after let's say 6 months or 3 months or 4 months, there is no use of such information because stakeholder will not be able to take decision within time. So it's your duty to give the details, disclosure, returns, documents within the stipulated date and time, right, to the stock exchange and investor, so that they can also take the timely decision. Because once the time is gone, the decision will be delayed and accordingly people will suffer losses. Listed entity shall ensure the dissemination means sharing, transmitting. Provision of this regulation, circulars made thereunder are adequate, accurate, explicit, timely and presented in a simple language. Lucid language, understandable now to a normal layman as well, who is having the basic knowledge of the finance. Okay, who is expected. Okay, channels for disseminating information shall provide for equal, timely and cost efficient access. Let's say, what are the channels for disseminating? Let's say example, website, it's very negligible cost, newspaper negligible cost, so it has to be equally timely and cost effective access of relevant information. There should not be something like कि सर मुझे शेयर होल्डर है और मुझे कुछ information चाहिए and I have to spend lakhs of rupees just to get the information from the company. This will not give the solution to my objective, correct? This will give a hindrance to the shareholder to get the information. Now, listed entity shall abide by all the provision of applicable laws. Sir, this covers entire law. This is not only Companies Act. Applicable laws cover all the applicable law. Let's say for labor law, मतलब आपका पोवा, पोगा, पोबा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, आपके फैक्ट्रीज एक्ट, वो सब लगेंगे, कॉम्पिटिशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी, आईवीसी, वॉट एवर द लॉज विच आर एप्लीकेबल टू द कंपनी, इट हैज टू बी फॉलोड इन 100% मैनर. देयर इज नो लकुना एज सच. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन, राइट? सब लोग साथ में हो भाई, परफेक्ट चल रहा है, वेरी गुड, ध्यान से समझना भाई. प्रिंसिपल गवर्निंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये हमने ऑलरेडी आरसीडी में भी पढ़ा हुआ है. आरसीडी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर इज चैप्टर कॉल्ड है शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, जिसमें आपने सुना है कि प्रिवेंशन, अगर कोई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट दिखता है तो दे कैन अप्लाई अंडर सेक्शन 441. याद आ रहा है क्या? अरे याद आ रहा है क्या? करेक्ट है कि नहीं? यस, ये आपका सेक्शन कवर हो जाता है, राइट? यस यस. फिर आपने वो भी सुना हुआ है 245 क्लास एक्शन सूट वगैरह, वो भी सारी चीज पता है आपको, राइट? चलिए इधर. यस, एक सेकेंड. नेक्स्ट इज राइट ऑफ द शेयर होल्डर. व्हाट आर द राइट्स? सर, लिस्टेड एंटिटी शैल सीक टू प्रोटेक्ट एंड फैसिलिटेट एक्सरसाइज द फॉलोइंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर. कौन से सर? राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, राइट टू सफिशिएंटली इन्फॉर्म व्हाट एवर द डिसीजन विच दे आर टेकिंग, एंड फंडामेंटल कॉर्पोरेट चेंजेस. Opposite to participate effectively and vote. It's the basic fundamental right to vote. ठीक है? Being informed, अगर वो DVR है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट रहेगा तो बात अलग है, अलग अलग चीज़. क्योंकि जनरली आपने देखा है कि नॉर्मल मार्केट प्राइस ऑफ नॉर्मल शेयर इज हायर, मच हायर देन DVR. डिफरेंशियल वोटिंग राइट सस्ते में मिलता है. ठीक है? Being informed of the rules including voting procedure that govern the shareholders meeting. Opposite to ask question to the BOD, they have their right. They can ask whatever they want as far as the company's business is concerned, to place items on the agenda of the general meeting and to propose a resolution subject to reasonable limitation. Next, effective shareholder participation is must because they are the major owner of the company. ठीक है? Nothing can be decided without their support. Example, normal resolution requires normal majority and specific which are material nature require special majority. ठीक है?
जिसमें वोट इन फेवर शुड बी 3 times हायर देन द वोट इन अगेंस्ट, तो मतलब 75% वाला करेक्ट है। तो इसके लिए इनको पार्टिसिपेशन इज मस्ट, such as nomination and election of member of BOD, exercise of ownership right by all the shareholder including institutional investor, example those mutual fund houses who have invested huge amount of money in the company, ठीक है, वो भी कवर। adequate mechanism to address the grievances of the shareholder, protection of minority shareholder from abusive action by or in the interest of controlling shareholder acting either directly or indirectly, and the effective means of to redress, मतलब in case if company is taking any of the decision which is against the shareholders interest or company's interest, they can apply against it under NCLT option, correct है। next अभी आ जाओ timely information, what are the timely information which is needed, shall provide adequate timely information to shareholder including but not limited, क्या क्या timely information concerning date, location, agenda of general meeting, right? Yes, just a second. Yes, sufficient timely information concerning the date, location and agent of the general meeting, as well as full and timely information regarding issues. Sir, you can't take the meeting directly without sharing the agendas of the meeting. You have to share the agenda, what will be decided in the meeting, then only they will come with a preparation. You have to give supporting documents of the particular topic. Let's say you are going to decide about dividend in the particular meeting, in the next meeting, you have to share the agenda of the meeting, so that the people who are going to come in the meeting and they are going to vote, they should be having the basic information about the position, then only they can give the required vote with the adequate knowledge, otherwise there will not be any use. So they can't give any surprise meeting notice और बुला लिया और बोल दिया कि kindly vote on this particular matter and will finalize. No, this can't be done. This will be considered as void of an issue, as well as full and timely information regarding the issues to be discussed. Capital structure and arrangement that enable certain shareholder to obtain degree of control disproportionate to their equity ownership. Capital structure means ownership rights. Okay, rights attached to all these series and classes of shares which shall be disclosed to the investor before they acquire. Means example, there will be some people who are subscribing to, let's say, normal, or let's say preference, or let's say their DVR, or let's say their right. So there will be different features of this. So they should be informed okay, what all shares you are going to subscribe and what are the features of this. So they should take information whether to buy this share or not, that way. Next, equitable treatment, which is fair and true and fair type. Listed entity shall ensure equitable treatment to all the shareholders. They can't say that only 10 people will vote, remaining 10 will not vote, we will not give you the voting rights. No, they can't do that. If they have given normal equity share to all the shareholders, they have to give equal treatment to all the shareholders. Let's say they are saying that only 60% will get the notice of the meeting, remaining 40% will not get. Or let's say they are saying 70% shareholders will get the annual financial statements, we will share, but will not share with remaining 30%. They can't say that. If they are following anything, they have to be followed for all the members. They can't restrict themselves for any particular person or not. All the shareholders of the same series shall be treated equally, obviously. But it depends on which series they are, which class they are representing to. Next, effective shareholder participation in key corporate governance decision. They can't. I have already told you, general resolution, special resolution, their participation is mandatory, otherwise it can't be full, it can't be proceed. Such as nomination election shall be facilitated. Exercise of voting right by foreign shareholders shall be facilitated. Generally nowadays you have the basic knowledge, voting can be done physical, postal ballot, फिर बाद में अपने e-voting भी आ चुका है. Earlier what was the case? Earlier there was no e-voting, people has to come, or postal ballot, ये सारी चीजें. Nowadays with the help of e-voting, huge amount of participation from the shareholders are getting noticed in the day-to-day life. And after the COVID, the volume of e-voting has increased multifold level. So day by day it will definitely increase, no doubt about it. The listed entity shall devise framework to avoid the insider trading and abusive selling, which is not allowed. And as per provision of insider trading rules, company has to take care of this, that any of the directors should not do this. If it is noticed, they'll take action against them. Either what they will do, they'll recover the losses, they'll recover the gains which they have made, or point number 2,
Point number two, they will remove him from the position and there will not be any loss of position payment, right? Process and procedure for general shareholder meeting shall allow equitable treatment. Procedure of listed entity shall make it unduly difficult or expensive to cast vote. It should be very cost, means least cost. Otherwise, people will not participate much and they will not give voting. Correct? So you have to promote them to come for the meeting, and either online, means either offline, and you should promote them to participate in the voting matters, so that company's future can be decided in a positive way with the participation of all, and there will not be any non-compliance of corporate governance. Next, what? Role of stakeholders in the corporate governance. Listed entities shall recognize the rights of all stakeholders and encourage cooperation between listed entity and stakeholders. Now, that is the cooperation with the company and stakeholder in the following manner. What is that? Point number one. Shall respect the right of shareholder that is established by the law. All the shareholders. What are the general examples of shareholders? Stakeholders. Company's employee, company's customer, company's suppliers, company's board of directors, means all the employees. Even government is also considered because you are making the payment of taxes to them. Correct? Bankers who provide you the funds, means lender, financial institution, bank, everything. Correct? Your investors, all are considered as stakeholders. Right? Stakeholders shall have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights. Stakeholders shall have access to relevant, sufficient, reliable information on timely and regular basis. It's the basic right. Relevant, sufficient, and reliable information. You can't give unreliable information. You have to give, always, I have told you 2-3 times as well. Whatever information which is given, it has to be true and correct and reliable. They can take the informed decision on the basis of the data or the information which you have shared with them. You can't give the information which is not reliable. Clear? Otherwise, stakeholder will face losses. Listeners shall devise an effective whistleblower mechanism. Whistleblower policy will be uploaded on the website of the company. Never forget this. This is a basic point. Whistleblower, there are two topics. This we have already discussed in detailed manner, either in the governance part, I must say. Right? Point number two, in the whistleblower policy will be uploaded on the website. Point number two, whistleblower name will not be disclosed. It will be totally protected, and company has to take care of take the immediate action on the basis of the whistleblower who is giving a particular sign or means the information about whatever the non-compliance are done, right? And it's a duty of the company to protect them. There are various ways in which the whistleblower can give the complaint, either in the form of speed post or in the form of email, right? So detailed process will be given on the company's website that can be followed by anyone, right? Next, last part is disclosure and transparency. Listeners shall ensure timely and accurate disclosure on all the material matters, including financial situation, performance, ownership, governance. Means what? Let's say you have already seen so many balance sheets, so many financial statements. The information has to be correct. It has to be followed by AFRF, applicable financial reporting framework. There should not be any, means financial statement should be free from material misstatement, either due to fraud or error, जो आपने SAC-DD में डील में पढ़ा हुआ है, right? Internal control must be implemented in detailed manner as per SA 315 given by Institute of Chartered Accountants of India. SA 315 says that internal control is the process, is the principle which is designed, implemented by those charged with governance or the directors, correct? So that the company's objective are fulfilled, means these objectives are fulfilled, and this reasonable assurance can be given to the stakeholders. What are those four objectives? Point number one, all the financial statements are reliable, all our operations are effective and efficient, all are practice, means all the practices are efficient operation, वो मैंने बोल दिया already. And next is what? एक financial statement reliable होने चाहिए, एक आपका हो गया ऑपरेशन शुड बी एफिशिएंट एंड ऑल द एप्लीकेबल लॉज का कंप्लायंस हो रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल द एप्लीकेबल लॉज का कंप्लायंस हो रहा है, राइट? एंड द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर सेफगार्डेड. सो दीज फोर फैक्टर्स, ये अपने इंटरनल कंट्रोल के डेफिनेशन है जो SAC-DD में बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. सो इट्स द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी to implement the internal control as per SA315, and also it's their duty to implement it, evaluate it, observe it. If any changes needed, it has to be implemented. Point number 2, they have to implement the internal audit in the company so that they can also cross check whether the internal control implementation is correctly implemented or not. Is there any loopholes? Whatever the internal control which we have implemented, whether it is correctly followed by all the employees or not. If at all any discrepancies are pointed out by the internal auditor, who can be the internal employee of the company or outsider as well, professional as well, CSE, CMA. So it has to be followed. And internal audit observation, if at all any discrepancy is found, then board of directors should give their report, their reply on those observations in the board report as per section 134 of Companies Act. I hope this is clear. Right? Correct है? Yes, perfect चल रहा है भाई. सारी चीजें कवर हो रही है, सारी चीजें मैं लिंक कर पा रहा हूँ with various different subjects, different chapters. Right? Information shall be prepared and disclosed in accordance with the prescribed standards of accounting, financial, non-financial disclosure. This we have already discussed. ये आपका AFRF वाइज. Channel for disseminating shall provide equal timely. ये हमने देख लिया. Minutes of the meeting shall be maintained explicitly recording dissenting opinion. Means what? Example, let's say there is a meeting in which there are two types of vote, in favor and in against. So it's the company's responsibility to maintain the data of who have given their votes in, who have casted their votes in the favor or in the against. So their detailed information must be counted. Then only the decision can be taken whether simple majority or special majority is satisfied or not. Correct? That's it. And why this is most important? You must have discussed in the RCD chapter number 4, directors. When the directors are considered guilty of any fraudulent action, all the directors in the meeting who have given the consent to that particular action which is amounting to fraud will be liable for the fraud under section 447. Point number 1. Point number 2, only those directors will be safeguarded, will not be, and 447 action will not be taken against those directors only if they can prove that they were not involved in the decision making, or they have not promoted this particular fraudulent activity. They have casted their vote against to a particular topic which is discussed in the meeting, in the BOD's meeting, whatever. So it's the basic responsibility of the company to properly record those votes which were given in the against, not in favor. So those people will be considered as safeguarded from the 447. Correct? I hope I am taking the references of SAC, DDC, RCD, whatnot, governance, because these are the chapters which is there in different subject as well. Correct? So whenever you are getting references from the other chapter, it shows कि आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है बाकी सब की भी, और आपको रिकॉल हो रहा है. This shows good amount of protocol. Right? चलो इधर आ जाओ. Disclosure of information. Member of BOD and KMP shall disclose to the board of directors whether they directly or indirectly or on behalf of BOD have material interest in any transaction or matter directly affecting the listed entity. Means what they want to ensure, the only simple point is कि उनका कोई conflict of interest तो नहीं है. मतलब the decision which is taken in the meeting by the directors should be totally independent. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका कोई relation है इसलिए they are giving biased decision. They have to give neutral decision. The directors can't be biased. Biased means what? They are favoring a particular person or particular position or particular decision because of their benefit. That should not happen. Right? Perfect? Yes. Very good. Next is, ये हमारा हो गया disclosure. Next, the BOD and senior management shall conduct themselves as to meet the expectation of operational transparency to stakeholder while at the same time maintaining confidentiality information. It has to be confidential, right? जैसे आपने सुना है UPSI, unpublished price sensitive information for the insider trading references.
If they know any particular information which is UPSI, it can't be disclosed or disseminated or shared among any of the person who is not authorized to have this information, unless and until it is totally purely disclosed by the company itself, right, to the stakeholder, while at the same time maintaining confidentiality of information in order to foster a culture of good decision making, right? Next. Now next part is issue of DR, a deposit receipt. Limit on issue as per FEMA. DR may be converted into equity share and vice versa. Obligation of domestic custody. एक से ओ ये नीचे आ गया, मैं वही बोला ये कहाँ से आ गया, एक सेकंड, अपना पेज नंबर क्या चल रहा था, ये we have completed this, right? अभी now next ये हमने कंप्लीट कर लिया डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट ये आता है अपना कॉमन ऑब्लिगेशन फॉर लिस्टेड एंटिटी. व्हाट आर द कॉमन ऑब्लिगेशन? जनरल ऑब्लिगेशन क्या है? लिस्टेड एंटिटी शैल एंश्योर दैट केएमपी, डायरेक्टर, प्रमोटर और एनी अदर पर्सन डीलिंग विद द लिस्टेड एंटिटीज कंप्लाई विद देयर रिस्पांसिबिलिटी ऑब्लिगेशन इफ एनी असाइन टू देम व्हाटएवर द ऑब्लिगेशन. जैसे लेट्स से मेरी कंपनी में 10 डायरेक्टर है, 10 डायरेक्टर को सबको तो सेम काम नहीं रहेगा. I have divided the work among them. So there will be one director who is taking care of finance, one director is taking care of operations, one director is taking of selling and distribution, one taking care of intellectual property right. So it's their duty to take care of the particular responsibility which is given to them. Correct? Next is what? A listed company shall appoint a qualified secretary as a compliance officer. Mandatory? Yes, sir. Right? Who will ensure conformity with the regulatory provisions and letter and spirit? Means all the regulatory provisions which are given in all the applicable laws. It's not only saying the Companies Act. Whatever the applicable laws, including CSEET Act, LODR, ICDR, buyback, inside trading, whatever regulation which is given by SEBI, it has to be followed. Coordination and reporting to the board, recognized stock exchanges and depository. Ensuring correct procedures are followed and reports are filed. Report are filed. Filed with what? Regulator. Let's say ROC, stock exchanges, correct, and CAD. These are the reports to be filed as per timely information. Timely timeline which is given in the provisions of the law. Monitoring email address of the grievance redressals division. And you must have heard about the score department, SCORES, right, for the grievances redressals, right? Share transfer agent, STA. Listed entity shall appoint as STA or manage the share transfer facility in-house. Means both the options is available. You can hire somebody else or you can make a particular department in your company as well. It means inside only, like same like inside internal audit. Internal audit can be done by any person, internal or external. Same way STA can be external or internal, right? Cooperation with intermediary is registered with SEBI. Who are the intermediaries? Right? जैसे कि आपका रजिस्ट्रार टू एन इशू, जैसे कि कोई भी कंपनी लेट्स से इज कमिंग अप विद IPO, FPO, that way. So who are the intermediate? Like they have to appoint a merchant banker, MB, उसका ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देगा तभी सर आगे प्रोसेस हो पाएगा. द रजिस्ट्रार टू द इशू, STA, ये सारी चीज आपकी इंटरमीडिएट है, राइट? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हु आर गिविंग द क्रेडिट रेटिंग टू देम, राइट? Cooperate and submit correct and adequate information to the intermediary, right? Register to an issue, STA, ये सारे चीज. So intermediary के 3-4 बेसिक पॉइंट क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, रजिस्ट्रार, STA, right? Next, preservation of document. They have to preserve the document in at least 2 categories. कौन से? By the BOD. Document whose preservation shall be permanent nature, मतलब mandatory lifetime basis पे, correct है? एक है वो, और with preservation for period at least not less than 8 years after completion of relevant transaction. However, listed entities may keep document in electronic mode. Means soft copy document is allowed, but mandatory retrieval is to be clear and proper authorization is prescribed. The information is accessible to any of the employees of the company should be restricted. Proper user access management must be specified so that the confidential informations are protected in the best possible manner, right? Next is what? Filing of information. The listed entity shall file its report, statements and documents, filing and any other information with the recognized stock exchanges on the electronic platform as specified by SEBI and NSE. Let's say one of the companies is listed on NSE, BSE, both. So they have to transmit and give information to both the stock exchanges, right? Say scheme of arrangement.
Listed company shall ensure that the scheme of arrangement, amalgamation, merger, reconstruction, reduction, these all the detail manner we have already discussed in the CRI part A, right? Let's say amalgam, MAD, MAD, mergers, amalgamation, demerger, slump sale, acquisition, absorption, amalgamation, reduction of capital, buyback, means your debt restructuring, equity restructuring, all will be covered under compromise arrangement schemes, C&A. To be presented to any court or tribunal means NCLT process will be followed, right? Generally, what are the major sections? 232, 232, right? For the compromise arrangement part, the application has to be given to the NCLT, section 230 of Companies Act 2013. Don't forget this. Okay, and let's say 233 फास्ट ट्रैक मर्जर, 234 आपका फॉरेन मतलब क्रॉस बॉर्डर मर्जर, ये सारे इन्फॉर्मेशन सारे सेक्शन जो है मेजरली कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का सेट अगर आप बोलते हो तो 230 से लेके मेजरली अगर बोलते हो तो 234 की बात करता है, राइट? फिर बाद में 235, 236 तो माइनॉरिटी के रिलेटेड वाला है, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स और उनके पेमेंट्स वगैरह, वो बाकी सारी चीजें। मेजरली कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट 232, 232 नॉर्मल रोड, और 233 इज यार FTM, fast track merger, which is applicable to wholly owned subsidiary, means 100% stake, or the small company. Small company का definition, please don't forget, as per new regulation is 4 crore paid up share capital, 40 crores turnover. याद रहेगा? देखो मैं बहुत सारे रेफरेंसेस ले रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के, ताकि आपका इजी रिकॉल हो जाए और डिटेल में अच्छे से रिवीजन हो जाए, राइट? अभी इतने सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद में इतने सारे सब्जेक्ट में इसका रेफरेंस आता है, तो इट्स माय ड्यूटी टू गिव यू द क्रॉस रेफरेंसेस. दिस विल गिव एडिशनल एज. गुड. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट और रिडम्पशन ऑफ पेमेंट. Listed entities shall use any of the electronic mode of payment facility approved by the RBI in manner of for the payment of dividend, interest, redemption or repayment amount, because it's their duty to repay. Means let's say they have asked for the redeemable preference shares or debentures, so they have to redeem on the due date. They have to pay the required interest rate which is promised during the issue. They have to pay the dividend. If it is announced, it has to be paid within 30 days, right? So all the particular compliances must be done, right? Next, grievances redressal mechanism. ये रहा आपका score platform. Listed entity shall ensure the adequate steps are taken for expeditious redressal. Means expeditious means what? Immediate action should be taken. No delay in taking the action, right? The listed entity shall ensure that it is registered on the score platform and other electronic platform system of SEBI as mandated from time to time. Right now, which is applicable score. Fee and other charges to be paid to the recognized stock exchange. It's their basic duty, fundamental duty to pay, right? If it is pending, then the stock exchanges can take a stringent action, even including delisting as well, right? As applicable to the recognized stock exchange in the manner specified by SEBI or recognized stock exchanges, right? So to remain listed entity, whatever whatever the application fees or maintenance fees, or let's say example any fine penalties, it has to be paid within the time period allowed by the recognized regulators, right? Next is what? This we have already completed. Now the composition of BOD. BOD means what? Board of directors. BOD shall have optimum combination of ED and NED. ED means what? Executive directors. NED means the non-executive directors, right? Yes, right? With at least one WD and not less than 50% of the BOD shall comprise of NED, right? Non-executive director, minimum NED should be minimum 50%, not less than 50% means minimum 50% should be NED. एक WD चाहिए women director, and I have maximum combination of ED and NED. Board of top 500 and top 1000 must have one independent women director. Now the composition, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, ये compositions of BOD committees ये बहुत इंपॉर्टेंट है. We have already completed the committees. Now it's a matter of few time we'll complete this as well. ये committees भी, ये chairperson BOD भी complete करते हैं फटाफट. Chairperson is a NED, non-executive director है, तो 1/3 of the board, I'm telling 1/3 of the board should comprise of independent director. Total का 1/3 should be ND. चेयरपर्सन अगर ईडी है तो हाफ शुड बी एनडी. वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना. कंपनी का चेयरपर्सन अगर एनडी है तो 1/3 चाहिए इंडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड द चेयरपर्सन इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर.
तो भाई 50% ही चाहिए, ठीक है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव के टाइम पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कम चाहिए, हाफ 75, ठीक है, हाफ 1/3 और 67%. Further, if the chairman is NED and is promoter of the company or any other related party, then half of the board should be independent. Same. Related party definition is as per AS 18 accounting standard 18 and I was already defined under Companies Act as well. Same way. Whether listed in company has outstanding SR equity share, at least half of the BOD shall comprise independent. So in any base, it is getting minimum 50% तो चाहिए आपका इंडी. 1st April 2022 से all the top 500 listed entities must appoint any person as a chairperson if the person is NED and is not promoter, non-related to the promoter. It has to be totally unrelated, right? Right? No listed entity shall appoint a person or continue the directorship of any person as a NED who has attained. So maximum age of that NED should not be more than 75. Maximum age 75. He can serve the post position only up to his age of 75, right? Unless SR is passed. So let's say, sir, in particular case, example Ratan Tata sir, right now he is 75 example and he wants to continue till 77. If SR is passed, he can continue till 77 as well. BOD of the top 1000 and top 2000 shall comprise of not less than 6 direct, minimum 6. बोर्ड shall meet at least 4 times. ये हमने ऑलरेडी देखा. बोर्ड मीटिंग कितने चाहिए साल भर में? मिनिमम 4. ऑडिट कमेटी भी मिनिमम 4 थे. बोर्ड मीटिंग भी कितने चाहिए? 4. अच्छा, इफ इट्स अ स्मॉल कंपनी मतलब 440 वाला, तो बोर्ड मीटिंग सिर्फ 2 ही चाहिए. याद रखना, भूलना मत. ये आपके CRI के जो फास्ट ट्रैक मर्जर वाले चैप्टर में देयर इज अ क्वेश्चन कॉल्ड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में कैश फ्लो आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है. AS3 इज नॉट एप्लीकेबल, रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट एप्लीकेबल, राइट. सेम बोर्ड कमेटी में आपको कितने चाहिए? सिर्फ 2 ही चाहिए. बट नॉर्मल केस में मिनिमम 4. भूलना मत. देखो मैं बहुत सारे रेफरेंसेस ले रहा हूँ अलग अलग, ताकि क्यूमुलेटिव रिवाइज कर पाऊँ अलग अलग सेक्शंस भी, राइट. Next is what? Quorum of the board meeting, 1/3 of total strength or 3 whichever is higher. Total के 1/3 और 3 which is higher, including an independent director. Top 1000 and 2000 के लिए, right? Next is what? This is the composition of BOD हो गया हमारा, right? Regulation applicable. Top 500, 1000 and 2000 को क्या क्या? Top 500, 1 independent WD, chairperson to be NED who is not related. Compulsory insurance of independent director of such sum as may prescribe. This you have already completed in RCD. अब देखो कितने सब्जेक्ट का रेफरेंस आ रहा है. RCD में there was a chapter, right? आपका D&O पॉलिसी याद आ रहा है क्या? डायरेक्टर ऑपरेशंस, अपने इंश्योरेंस, डायरेक्टर्स का इंश्योरेंस, ठीक है. डायरेक्टर्स विल गेट मोटिवेटेड टू गेट अपॉइंटेड इन अ पर्टिकुलर फर्म और कंपनी वेयर देयर इज अ D&O policies. Means they are protected. Otherwise what will happen? Due to any small or big non-compliance of their particular activity, because of which if anybody is getting suffering the losses, they can claim the losses from the director. And to protect them, independent director is must be secured with the help of insurance, right? Top 1000 listed companies, 1 independent director. The board should comprise of at least 6. Quorum is what? 1/3 or 3 which is same, including एक independent director चाहिए. RMC to be formed, risk management committee हमने already नीचे देख लिया. DPP to be formed, DDP to be formulated and to be disclosed on the website. ठीक है. नेक्स्ट टॉप 2000 के लिए BOD should comprise of at least 6, 1/3 or 3 which are higher, including 1 independent. सेम चीज. मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ बोथ इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव. डायरेक्टरशिप में क्या बोला है ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क करके रखना है इसको, राइट. कितना है ध्यान से समझना. नेक्स्ट, नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज. Not more than, maximum he can hold the directorship in 7 listed entities, and in case of full-time director or MD in any listed entity shall serve as an independent director not more than 3. क्यों ये प्रोविजन आया? The logic behind this law is if he is occupied with so many companies work, he will not be give proper time, proper due diligence to a particular company. Otherwise what will happen, he is doing so much of work, he will not be able to do one work properly. That should not happen. Hence this limit is prescribed. What is the limit? Always remember, for the directorship not more than 7, maximum 7 listed entities. ठीक है. Second चीज,
एंड इन केस ऑफ डब्ल्यूटी एंड एमडी, अगर वो ऑलरेडी लिस्टेड एंटिटी का एमडी या डब्ल्यूटी है तो वो मैक्सिमम 5 सॉरी मैक्सिमम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है अदर कंपनीज में. Director shall not be a member in more than 10 committees maximum. Otherwise, what will happen? The same director is in the committee of, let's say, more than 10-15 committees. He'll not be able to give proper justice to his work. That's it. Hence, this is also a limit. Or act as a chairperson of more than 5 committees. One person can become chairperson of maximum 5 committee, and one director can become the member of not more than 10. मतलब maximum 10 is allowed. 11 is not allowed, 10 is allowed, right? Chairperson I can become for 5 committees, 6 is not allowed, 5 is allowed. Across, it's not less than, okay? It is not more than, it means 5 is allowed, right? Listed in which is the director. I hope this is clear. So second page is also done. We have already completed this composition part for AC, NRC, SRC and the RMC. The regulation number also we have learned 18, 90, 20, 21. We will go in the same way. 18, 19, 20, 21. 18 is audit committee, SRC, NRC, right? Sorry, in audit committee, NRC, SRC, and then last RMC. 18, 19, 20, 21. Right? I hope this is clear. Disclosure. Yeah. This is done. Meeting also done. Next, last point. Yeah, आपका regulation 21. Prior intimation to board meeting to the stock exchange. They want to have a board meeting, so they have to inform this also to the stock exchange. So what is the time limit? At least 5 clear days. In case of financial result, quarterly, half yearly or annual. Intimation with the date of board meeting as well. तो ये आपको prior बताना है. Word is what? Prior intimation. Means this is not post, it is prior. Post is what? Post intimation means once this is done, then you are informing. This is what? This is prior intimation. Before you are taking the meeting, you have to inform to the stock exchange for 5 clear days in case you are going to announce the financial result quarterly, half yearly or annually, whatever, including the date of board meeting. Correct? Next is what? At least 2 working days in case you are going to propose BB, buyback. Correct? And propose for voluntary delisting from the stock exchanges. At least 11 working days before for any kind of alteration in the form or nature of any of its securities or in the rights or privileges of the holder thereof. Right? So, in case you are going to change the form or nature of any security, so that also you have to inform to the stock exchange prior 11 working days. So, what are the prior days? There are 2, 5, 11. 2 is what? Extreme urgency level पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है. तो बीबी एंड डिलिस्टिंग. नेक्स्ट है 5 में क्या आता है आपका फाइनेंशियल रिजल्ट इंक्लूडिंग चाहे बी इट योर मंथली और क्वार्टरली और एनुअली, सेमी एनुअल, ऑल कवर. 11 इन केस यू आर गोइंग टू चेंज द फॉर्म एंड नेचर ऑफ द सिक्योरिटी. नेक्स्ट इज व्हाट? रेगुलेशन 30. वी आर डन विद, देखो आप अभी 29 कंप्लीट, अभी 30 की बात करें. डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन. Disclosure of any events or information which is in the opinion of the board of directors of the listed company is immaterial. It's material. Disclosure of any event, information, any event, be it any small decision which is going to affect the company entirely, stakeholder, and that is material nature. Material means who is going to change the decision making power. Decision means influencing decisions, right? Event mentioned in part 3 schedule A are deemed to be material and needs to be disclosed irrespective of the opinion of the listed entity regarding its materiality. Means even if the company is considering that particular event as immaterial, still if it is mentioned under schedule, they have to apply, they have to inform. Part B, where test of materiality can be applied by the listed entity. Part A discloses the list where it is considered material even though company doesn't consider as material. Part B shows that company can decide whether it is material or not. Accordingly, information can be transmitted. Next is what? These events are to be disclosed promptly, not later than 24 hours. 24 घंटे के अंदर. Means these are very important and crucial decisions which has to be updated to the stock exchanges within. What are they saying? Within, not later than, means within 24 hours. Certain events are required to be disclosed within 30 minutes of the company. Extreme level of urgency.
मतलब मीटिंग खत्म होते ही 30 मिनट्स में हैव टू डिस्क्लोज. नेक्स्ट इज व्हाट, 2 क्लियर वर्किंग डेज में. ये हो गया हमारा बायबैक वॉलंटरी. सी फंड रेजिंग बाय वे ऑफ, सर you want to go with public offer, right issue, ADR, GDR, foreign currency, FCCB, foreign currency convertible bonds, QIP, qualified institute placement, debt issue, preferential issue, and determination of issue price, any AGM, EGM or postal ballot proposed to be held for obtaining the shareholders approval for further fundraising, right? Means you want to go for FPO that way. Declaration or recommendation of dividend, issue of convertible security, including convertible debenture or debenture carrying a right to subscribe to equity share, means conversion, convertible debentures, or the passing over of dividend. So these, and including the proposal for declaration of bonus security. For these points A, B, C, D, E, F. So these points you have to do at least 2 working days prior intimation to stock exchange. And at least 5 working days, this we have already completed, right? Next, 11 working days wala, this we have already completed. Next is any alteration in the date on which the interest on debenture or bond or the redemption amount of the redeemable share or debenture or bond shall be payable. Any alteration on this part, right? Now the last part, last two pages, then the chapter will be over, right? I thought it will be done within an hour, but to verify the coverage is huge. Basically, we'll try to end up by next half an hour more. Let's try that. Sure. Next is what? Outcome of the meeting of the board of director held for discussion to be restored within 30 minutes of conclusion. कौन से? What are those decisions which has to be intimated to stock exchange within 30 minutes? Declaration of dividend or cash bonuses recommended or declared, or the decision to pass any dividend and the rate on which dividend will be paid or dispatched. If these type of decisions are taken within 30 minutes. Any cancellation of dividend means you are cancelling due to any specific reason, right? Let's say example, now any particular company is facing huge amount of cash crunch and would like to go for section 10 of IBC CRP initiation by corporate applicant, by corporate data itself. Then with this specific reason they can cancel the dividend payment as well. So they have to declare within 30 minutes of the board meeting to the stock exchange. Decision to BB. They say Wipro has announced the buyback just now, recently, last week, that way. Decision with respect to fundraising proposed to be undertaken. Increase in capital by way of bonus share. If company would like to issue bonus share through capitalization, obviously they can use the free reserves, including the date on which such bonus shall be created or dispatched. This will be transmitted within 30 minutes to the stock exchange. A reissue of forfeited share means you already know what the meaning of forfeited share. Shares on which the money was not paid by the shareholder, even after calling of the amount, even after calls are in arrears, then company can forfeit, and whatever the amount which was paid earlier, let's say example face value is 10, 6 was paid, 4 was pending, company called for 4 rupee, shareholder didn't pay, even after continuous follow-up, whatever the amount which was paid earlier means the amount 6 will be forfeited, will not be refunded to the shareholder and will be with the company itself. So if they want to issue these forfeited shares, so they can issue that also need to be updated to the stock exchange within 30 minutes. Or the issue of share. अरे यार किधर चले गए? Yes, right. Increase in capital by ये हो गया ratio of forfeited or security, or the issue of shares or security held in reserve for future issue, and the creation in any form, in any manner of new share or security or any other rights and privilege and benefit. Short particulars of any other alterations of capital including calls and the financial results. So this will be intimated within 30 minutes. So they may ask you a question, what are the circumstances in which company has to inform to stock exchange within 30 minutes. So you have to write down this, correct? Or they may give you
a list of points. जैसे कि इसमें से एक दे दिया, they may give you one of this, one of this, one of this, and they will ask you write down the days within which it has to be prior intimated to the stock exchange. So you have to remember 2, 5, 11, 30 minutes to ये आपका 30 minutes, 24 hours that way, right? Details of the familiarization program imparted to independent director. Sorry, कौन सा चला था अपना, ये अपना लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया पूरा. नाउ दिस dissemination of information means transmitting on its website what all documents, what all information to be shared on website. The listed entity shall disseminate the following information under separate section. What are the business details, means what is the nature of business which company does. Terms and condition of appointment of independent director, means what is the fees which you are paying them, what is the nature of appointment, for what term you have given this appointment, everything, whether they have given the consent or not, everything. Composition of various committee of BOD like AC, SRC, NRC, अपना RM. So all these committees का detail also you have to give on the website, right? You have to give their composition so that people can also check whether it is compliant or not. Code of conduct of the BOD and senior management, what they are allowed to do, what they are not allowed to do. Details and establishment of vigil mechanism, whistleblower. Vigil mechanism, whistleblower, I have already discussed. This will be uploaded on the website so that any whistleblower, if they want to blow the whistle, if they want to update and what we can say, share a particular information where they are finding it as a non-compliance or fraudulent activity or any material nature of discrepancies, so they can update the information to the BOD by way of whistleblower. Criteria of making the payment to the NED, if the same has not been disclosed in annual report, so it will be uploaded on the, if it is given in the annual report, no need to give on website. If it is not given in annual report, it has to be given in the website, on the website. Policy on dealing with RPT, how the related party transaction as per AS 18 of accounting standard are decided, and as per Companies Act regulations as well. Whether voting is done or not, whether the transactions were within the ALP arm length price or not, if it is outside the arm length price, so whether they have taken special resolution or not, or whatever the policies which they have implemented, so whether it is followed or not. Policy for determining material subsidiaries, right? Next is what? Details of familiarization program imparted to independent director. What do you mean by familiarization program? The independent director is obviously the outsider. You are inviting him to become a part of the company, and here onwards take the decision in the interest of the stakeholders. So you should come to know about the company and its business and every single thing, mission, vision, and everything. So for that matter, you need to have familiarization program so that the particular independent director will get familiarized with the entire operational level, hierarchy, environment of the company. Number of program attended by the independent director during the year and on cumulative basis till date. You have to report on this. So it will come, so stakeholder people will come to know whether they are doing this compliance or not, whether the interested director are attending or not. Likewise, sometimes it happens that they are organizing, but independent director are not even attending. So there is no use of such meeting, such familiarization programs. Number of hours spent by the independent director in such program, it is mandatory, so you have to give their reporting of attendance along with the hours they have attended. The other detail like email address for grievances, where they can issue or submit their grievances, it has to be given on the website. Contact information of the designated officials who are responsible for assisting and handling investor grievances, so that, let's say, obviously there will be lakhs of employees of the company. To whom specifically they have to coordinate regarding this complaint, it has to be given by way of, let's say, email ID, mobile number, whatever, so that they can directly connect with the right person. Otherwise, there will be so much of delay in transmitting the information or a specific dispute. Or in sometime what happens, due to so much of coordination in various people, the main information which was supposed to reach at a particular level will get lost in between the transit itself. Notice of meeting of the BOD where financial results are discussed, financial result on conclusion of the meeting, the board of directors where financial results were approved. Complete copy of the annual report including balance sheet P&L.
corporate governance report, director's report. These are what? These are the details. Yeah, these are the points which are to be given on the website. All this point, right? Next is what? Other relevant details. ये हमारा हो गया यहाँ तक. Complete copy of annual report including अपने financial result, all the financial. What all financial result is? Balance sheet, P&L, statement of changes in equity, cash flow, notes to accounts. Shareholders pattern, details of arrangement entered into with the media companies and or their associates. Now next is what? Schedule of analyst or institutional investors meet and presentation made by the listed entity to analyst. Institutional investors simultaneously with the submission to stock exchange. Name and old name of the entity. Obviously, in case there is a change in the name, so they have to disclose what was the old name, what is the new name. Take care for a continuous period of 1 year from the date of the last name change. After 1 year, if they don't show the old name, that is allowed. But till 1 year gets elapsed, they have to show the old name, so that people will not get confused. That earlier I was getting the name of TCS. Now let's say TCS has changed their name to TPS example. So I'll search TCS, I'll never get the details of that. Correct? So if the shareholders want to get the information, so it's better to share both the information, both old and new. Right? Item in simplification. All credit rating obtained by the entity for its outstanding instruments updated immediately as and when there is a revision. Like AAA, AA, A plus, B plus, whatever the rating which is given by the credit rating agency like CRISIL, ICRA, that way. If there is any revision, means they have changed, let's say downgraded or upgraded, that way that is also be updated, that will also be updated on the website. Why? Because let's say earlier the company was AA, now it is AAA, means what? The rating has been upgraded, it shows a good means positive result on the company's future. So the stakeholder should be informed by way of updating this information on the website. If there are downgrade, like earlier it was A, now it is degrading to B, so it's an alarming situation. So it has to be shown on the website as well, so that people can think about what to do with their existing investment which they have done. Let's say I have 1 lakh rupee in the Tata company, Tata Motors, and ratings have been downgraded by, let's say, their credit rating agency CRISIL. So I'll remove my investment because I don't want to continue with B rating. I want only my investment in AAA rating companies for my safety. That's it. Separate audited financial statement of each subsidiary of the listed entity in respect of relevant financial year, uploaded at least 21 days prior to the date of AGM. AGM से 21 दिन पहले, which has been called for inter alia. Consider accounts of the financial year, right? So these are periodical compliance for listed entity. This I will not go through. This you can refer. Already soft copy of this is already shared. I'll also post the link in the comment section. What you have to do, these are all half yearly compliance days, the time limit is given, half yearly, annual event based, right? That way it is given, right? You can go through on the road. Okay, because obviously you can't remember each and everything, just at least go through whatever few points you can remember, that is okay. And don't invest so much of your time in reading all this one by one. Okay. Right. Next, small and medium sector enterprises, SME. This is very important. SME is what? Holding of specified securities and shareholding pattern. Listed entity which have listed their specified security on SME exchange, different platform, shall submit to stock exchange a statement of showing holding of security, shareholding pattern separately for each class of securities, class wise, in the format specified by SEBI itself. From the time to time on half yearly basis within 21 days from the end of each half year compared to quarterly prescribed for company listing.
Statement of deviation or variation. Deviation or variation. Listed entities which have listed their specified security on NSE exchange shall submit the statement of deviation, whatever the non-compliance, and variations as a prescribed under regulation on half-yearly basis. Financial result within 45 days, yeah, or requirement of submitting year to end financial will be applicable for listed which has been listed their specified securities on NSE exchange. ये मैं जो टाइमलाइन वाला चीज है आई एम गोइंग टू स्किप दिस. ठीक है, आगे देखते हैं. ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, इवेंट बेस्ड. Let's say you are going to appoint a STA, you have to go within 7 days of agreement with RTA, that way. So these are event based. So this is a list given by the model. The references of them have been taken care under this. Next is what? Non-convertible debt security, non-convertible redeemable share. Regulation 50. Intimation to stock exchange. You have to do prior permission, prior intimation, at least 11 working days before the date on or from which interest or redemption amount shall be payable. Intimation will be given to the stock exchange. Sir, why exchange of and bracket S? If you have been registered with 2 or 3 stock exchanges, you have to report to all. If you are registered only with one, you have to give only with one. His intention to raise fund through NCD, NCRP, prior, this way it is given. It's okay. I hope most of the things are same only. These are in the schedule 3 part B, material information, that way. Like this is done. Any revision in the rating, which we have already discussed. So detail of this day wise reporting, within how many timeline you have to report to the stock exchange, this list is given. This is the last page and the chapter is over. Right, you can go with this. The compliance officer and its obligation. Oh, most important, we'll cover this as well. Who is compliance officer? Qualified CS. What is the obligation? Ensure the compliance with all the applicable laws, all. Coordinating and reporting to the board, ensuring correct procedure are followed, monitoring email address of grievances. Right. Next is what? Role of CS. These are the obligation of compliance officer. Now next is what? Role of CS. CS is required to certificate to the effect that all transfer have been complied with the specified time. Certificate in practicing company secretary, PCS will give the certificate that compliance of all the condition of corporate governance. CS will issue a half yearly certificate by PCS regarding maintenance of 100% security cover in case of NCD. So who will be this PCS? This PCS will be outsider of the company. Means he will not be the compliance officer. This certificate will be issued by the practicing CS. ठीक है, मतलब कंपनी में अगर खुद का ही they have their own in-house CS, can he give this certificate? Answer is no. Right. Next, secretarial audit report by practicing company secretary and annex with the annual report. This you have already covered in SACDD entire part B. Certificate from the PCS that no director have been debarred or disqualified. This also required. Also one more important thing. Right. Even the chartered accountant who is a standard auditor of the company, he will also check all this, and if he found any of the director is disqualified, he'll also report. Correct? Eh? So financial result, they have to prepare and submit the unaudited / audited financial results on half yearly basis. Even if it is unaudited, still they have to issue. They have to share this in the format as specified by SEBI within 45 days at the end of half year to recognize stock exchanges. In case of entities which have listed their equity share and debt security, copy of financial report will be submitted to stock exchange and will be provided to debenture trustee also. Who are the debenture trustee? They are the interest protector of debentures, because there is a company and there are debenture. Who is the linking part of these two? Who becomes the bridge of share debenture holder and the company? Means they are here to protect the interest of the debenture. So it will be issued to the debenture trustees as well, so that they can take the decisions and they can protect the interest if any of the decision or the action which is taken against the debenture holder. So they will come to know after the financial statements reading. So they have to issue to them also. Listed entities shall comply with the following requirement with respect to preparation, approval, authentication, publication of the annual and half yearly. Annual means after 12, semi-annual means your half yearly means 6 months. Unaudited will be accompanied by the limited review report. Limited review report will also be given by the statutory auditor. Most important point.
Don't forget this. Limited review report will not be given by the internal company secretary, or let's say BOD or MD, CEO, CFO. No, it has to be certified by the chartered accountant, who is your statutory auditor, who has been appointed under section 139 of Companies Act, who is officially your chartered accountant only. It has to be PCA, practicing chartered accountant, right? Or in case of public sector undertaking, by the practicing accountant. If the listed entity intimate in advance to the stock exchange that it shall submit annual audited result within 60 days from the end of financial year, unaudited for the last year accompanied by limited review report need not be submitted. Already if it is given, in case if it is audited, so no need to give limited review report. If it is unaudited report, then only you have to submit limited review report to the stock exchanges. Don't forget this. Next, half-yearly results shall taken on record by the board of directors, by the BOD, and signed by the MD and AD. It has to be signed by these people. If there is no sign, it will not be considered as a full and final. This will not be considered as valid because there are signatures pending. If the listed entity opts to submit unaudited financial results, for the last 5 years accompanied by limited review report, मैंने already बताया limit LRP, limited review report will be certified by the अपना statutory auditor. It shall submit audited financial result for the entire financial year as soon as it is approved by BOD. Let's say earlier it was unaudited, now it is approved, audited also. Then again they will submit audited financials. In case of modified opinion, this also you have completed in SACDD Part B. There are 3 types of opinion which auditor gives. The adverse opinion, modified opinion, and disclaimer of opinion. There are 2 types of opinion: modified, unmodified. Unmodified matlab clean report, everything is clear, no issue at all, true and fair, sab kuch complied. Modified means there are some non-compliances. Then unmodified mein 3 parts: qualified, adverse, disclaimer of opinion. 3 parts. I am talking about modified opinion. Modified mein 3 बच्चे अपने कौन से भाई? Modified opinion में एक adverse, qualified, and last third is disclaimer of opinion. When the auditor is unable to get sufficient appropriate audit evidences, he has not able to get the sufficient appropriate audit evidences during the audit. He has exercised all his due diligence. He has followed all the audit procedure. Still is not able to get SAI, sufficient appropriate audit evidence, SAI. Then in that case, he will issue disclaimer of opinion. हाथ खड़े कर दिए भाई, I am not in a position to give opinion on this company's financial statements. Point number 1. This is also a part of modified opinion. Point number 2, second modified opinion is adverse report. Adverse report shows that most of the financial statements means most of the items of financial statements are not giving true and fair view, are having the material misstatements, means there are non-compliances. The reporting which is done by the company is not correct, not true and fair view. There are non-compliances, means financial statements are materially misstated, and the impact of such is pervasive in nature. So both the condition must be satisfied, material and pervasive in nature. Then only it will be given as adverse opinion. This we have already discussed in detailed manner in SACDD Part B. And third one is modified opinion. Qualified opinion. Modified opinion के 3 बच्चे: qualified, adverse, disclaimer. We have completed disclaimer when there are no sign. We have completed adverse when the entire financial statements are material misstated, pervasive in nature, highest level of impact, not in a position to take decision on the basis of these financial statements because they are non-compliant. Last third modified opinion part is qualified report. Qualified report is given only in case of one material misstatement, not entire financial statement is material misstated. Only one point of discrepancy found, right? So the discrepancy means the misstatement which was found by the auditor is of material nature, but the impact of such is not pervasive in nature. Then only it will be issued the adverse qualified report, right? So if this modified opinion is given by the audit report, means by the chartered accountant, right, under section 143 auditor's report, I love you 143 shortcut to remember this, 143 I love you for auditor's report, uska ulta 134
134 is for board report. That have a bearing on the interest payment, dividend payment pertaining to NCRD or redemption or principal repayment capacity shall be appropriate and adequately addressed by the board of directors while publishing their accounts for the same period. If any modified opinion is issued in the auditor's report, means auditor is saying material misstatement, discrepancies in his report, then it's the duty of the board to give the answers to these in their board report. That's it. I hope the chapter is over. We have completed each and every part of this chapter. We have summarized in the best possible manner, right? And we covered in just 1 hour 45 minutes. 1 hour 45 minutes. I hope this mini marathon will be definitely useful for this, very useful for your preparation, and this will not only give the CFL Part B confidence, this will also give you various references of SACDD, RCD, CRI, right? I hope this will be beneficial. Thank you so much guys. Bye bye. Good day. Take care. खाओ पियो मजे करो. मिलते हैं soon. Bye bye. Best luck for your exam.